Is the screen visible, everyone? Please confirm in the chat. All right, Amit. Okay. So अभी हमारा CSS में we learned the inline and internal. External CSS is left. We'll do it with a project, right? Nothing much on that. Similar here. It's just that you're going to import the external CSS using a link tag, and then basically, you'll be using classes and IDs in that, right? Sure. Basically, let's start with the JavaScript. Now, again, I'll be using the W3 school. So, agar any one of you is, is there on the laptop, please keep this open. All right. Okay. So, what is JavaScript, right? Basically, it's a programming tool. Okay. Programming language. What is a programming language? I would want to know the definition from you guys so that we are clear with the basics. Do you know what is a programming language? Give me a definition in the chat. All of you must have learned the C. Just like your, HTML was a skeleton, the CSS gave the beauty. The programming language will be the brain, right? So JavaScript will be the brain of our complete project that we are going to build. What is the program? What is a programming language? Computer doesn't understand, right? A formal language used to write instructions, tell a computer what to do. Yeah, kind of. Yeah. So basically, the computer doesn't understand what we speak, right? English नहीं समझ में आती computer को, right? Or Hindi computer doesn't understand. It understands the language of electrical pulses. जिसको हम zeros and ones कहते हैं, right? Zeros and ones, or the binary language. What is a zero? Zero means zero pulse, like कुछ भी नहीं, no pulse, right? One means an electrical signal, a single pulse created, right? जिसको हम on and off भी कहते हैं. All right. Now, even to make it understand that, we would need, हम भी तो zeros and ones नहीं कह सकते ना उनको. So we also need a certain language that we can understand, right? And then maybe my compiler can make the computer understand a language. So हमें common language पे आते हैं. Just like, for example, people in the south, have so many different languages. People in the north will have so many different languages, right? But अगर हमें सबको, we have to talk everyone in the same language. We'll keep a common language, right? English is a very easy language, so we prefer English. There could be Hindi, another language, right? So similarly, here in the computer system, we use some programming languages. Those are called high-level languages, right? One of them is JavaScript. JavaScript is popular in making websites, right? Sure. So what is the JavaScript? Again, easier to learn, right? It's a high-level language. Let's go with the first, code that they have written. Now, yesterday, kind of, we had seen what is on-click, right? On-click was an event. Like जब आप कोई भी एक event trigger करते थे, something should be executed. So event should have a target, right? Now, when you clicked on the button, on-click event was executed, and then you can see this command here. Okay, I'll just copy this here. Okay, let me just paste it here for you guys. So it says document.getElementById demo dot inner HTML is equal to date. We'll break it one by one. What is a document? Okay. What happens? आपका जो पूरा का पूरा वेबसाइट है और your browser is there, right? उस वेबसाइट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. It creates an object.
and that is what you call a document. Okay, so I'll write it down here. So basically what happens is the browser creates an object, right, of what? Of your website, of your HTML website, right? Now, this object's name is document. I hope this much is clear. Yeah. Now, in that you're saying get element by ID demo. So you have defined an ID demo. ठीक है? कहाँ पे वो ID defined है? Let us see here. Let's see where demo is defined. See here it is defined. ठीक है? अब क्या होता है? See, understand. There's a p tag, right? There can be multiple p tags. Just for example, let's say your name is Sumit. ठीक है? किसी एक लड़के का नाम सुमित है. आपके क्लास में हो सकता है कि multiple सुमित होंगे. ठीक है? But how do you differentiate, different Sumits in academics? आप उसको एक registration number देते हो, right? You give him an ID number, right? Similarly, we have so many p tags. We can give them different IDs and different classes, right? So here, for this p tag, we give it an ID by the name demo. Now, what it is saying, document get element by ID demo. Now it gets this element, okay, and its ID is demo, and it's saying for the inner HTML, please print the date function. So date function is an intrinsic function that is already defined inside the JavaScript, inside the HTML. It will get fetch the date जो उस time पे होगा, ठीक है? चलो, let us if I click on this, uh, just give me a moment, guys. I'm getting a call. Sorry. Just give me a moment. I'll be muting myself. Yeah, sorry guys for the disturbance. Okay, yeah. So when we click on this, a p tag will show me the date. See, I am getting a date. Okay, if I change it to h1 tag, okay. If I change it to h1 tag and I run this, you see that the thing that is present to me is formatted as a heading tag, right? I think this is clear to you all, guys. ये line clear है आपको? Please confirm in the chat if this line is clear to you, because you will be seeing this line so many times in the further lectures. Okay. Now, this specific thing that we did right here is called DOM manipulation. ठीक है? क्या कहते हैं इसको? DOM manipulation. I'll write it down here in the chat as well, so that you all can search it even. It is called DOM manipulation. What is a DOM manipulation? The process of using JavaScript, ठीक है, ताकि हम HTML के content को, structure को change कर सकें या उसके style को change कर सकें according to our own logics. I hope this is clear to you all, guys. ठीक है? So a DOM represents an HTML document like a tree of objects. ठीक है? तो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको. जैसे मैं बोला ना, ये एक object है. The document is what? It's an object. So and this object works like a tree. तो इस tree के multiple branches हो सकते हैं, right? What could be the branches of these documents? Right? One could be your h1 tags, right? H1 tag is also a, इस tree का branch है, right? Then it can work with again h2 tag, p tag, body tag. So बहुत तरह से आप इसको manipulate कर सकते हो. All right, guys. ठीक है? I'll just remove this. Now, let us close this and let's move forward. Okay. Anyways, let's move forward. Let's go to our introduction. And let's try to run an example and then we'll see क्या है. चलो. Let's run this one. ठीक है? बहुत ही सिंपल बॉयलर टेम्पलेट है आपका. वी हैड अ बॉडी, वी हैव h2 टैग, p टैग, ये सब हमको पता है. नाउ वी हैव अ बटन. अगेन उस पे यहाँ पे इवेंट हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू क्लिक ऑन इट? किस बटन पे क्लिक कर रहे हो आप? बटन का नाम है टर्न ऑन द लाइट. दिस इज द बटन, राइट?
You click on document.getElementById my image. Where is my image defined? Here, है ना? अब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे SRC पहले क्या है, पिक बॉटल ऑफ, अब देख लो बल्ब ऑफ, राइट? तो जब इनिशियली हमने लोड किया इस पेज को, बल्ब इज ऑफ, राइट? क्योंकि क्या हुआ कि इनिशियली हम कोई डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. Yeah, sorry guys for the disturbance. Yeah, so up the initially when we are loading, we have not done any DOM manipulation. When we are going to do it, when you're going to execute the action, we have neither clicked on this button, the button one, we have neither clicked on this button, right? हमने किसी button पे click नहीं किया है अभी भी. Now what is happening is the first button says कि document.getElementById my image is in this section. जब इस पे click हो, then change the SRC source to pick bottle bulb on .gif, right? So जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज चेंज हो जाएगी and it change to bottle on. By default it is bottle off. Similarly on the second button, turn off the light, you see turn off the light is here. What it is saying कि इसको जब हम क्लिक करेंगे, change the SRC to bulb off, right? So let's click on this. The image changes, right? And जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इमेज चेंज आएगा. जब दोबारा से क्लिक करेंगे, it will load the same image, very same image, because it's already, you know, bottle of image, right? Bulb of image. I hope this is clear to you all guys. Please confirm once ये कोड आपको क्लियर है तो. If you have any doubt please ask. Thanks Amit. Just give me a bit of messages in between so that I know that you are progressing, right? Chalo. I'll close this and we'll move forward with some other examples. Okay, let's go to this one. Okay, let's see first what it is doing, right? When I click on this, it is showing me hello JavaScript, right? Again same thing here. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने एक आईडी डिफाइन किया डेमो करके. Now you have given the style display none. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. Hello JavaScript already written है, but you have given it display none. That is why it is not showing anything in earlier, right? But what is happening कि आप when you're clicking on this button, again we are doing a DOM manipulation for the ID demo, and we are seeing now display will equal to block, right? And then when you click on it, ये visible हो जाता है, right? If I initially set this to block, okay, and I run this, देखो पहले से JavaScript visible है, ठीक है? And when I click this to, let's say none, okay, and I run this. Now after clicking it, it will disappear. See? ठीक है? I hope this much should be clear to you all guys. Simple DOM manipulations आ जाए, कुछ भी tough नहीं है. अब देखो JavaScript जो है, it follows the ECMAScript standards, ठीक है? तो बस ECMAScript is the official name of the language, ठीक है? हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? I hope this is clear. So let's read this fact. क्या है? JavaScript and Java are two completely different languages, ठीक है? Both in concept and design. Please do not confuse. A lot of people confuse in Java and JavaScript. JavaScript was invented by Brendan Eek in 1995 and became an ECMA standard in 1997, right? So current standard का name क्या है? ECMA 262, right? Is the official name of the standard. ECMAScript is the official name of the language. चलो, let us go here. Now, जब हम कभी भी जावास्क्रिप्ट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इंटरनली भी डिफाइन कर सकते हैं एंड हम जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली आल्सो वी कैन डिफाइन, राइट? नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इंटरनली यूजिंग अ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है? लेट्स सी फॉर आवरसेल्व्स हाउ इट इज. सो इनसाइड द बॉडी यू डिफाइन अ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है? उसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो.
Okay, we are writing the JavaScript inside, internal JavaScript inside the body tag. Where do you write the internal CSS? Please, this is a question. आप internal CSS कहाँ लिखते हो? Inside which tag? In the head tag. Right email. ठीक है, so let now style is that you write, ठीक है आप कैसे वो डाल रहे हो, but I am asking कहाँ पे लिखते हैं, inside which tag, right? किस tag के अंदर wrap होता है वो? So it is wrapped inside the head tag, just like यहाँ पे जो script tag है is being wrapped inside the body tag. ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने script tag को एक internally यूज कर ले रहे हैं, but also we can use the scripts outside. So अलग से हम JavaScript फाइल बना सकते हैं. And how do we save it? Using the .js extension. चलो what is happening here? Let us see. So you have given a demo, ठीक है, आपने p tag के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, you have not written anything. अब क्योंकि यहाँ पे we can manipulate it to write there. Also there is no buttons, तो हमें manipulate करने की जरूरत, so basically हमें वहाँ पे events को trigger करने की जरूरत नहीं है, right? Manipulate तो हम कर ही रहे हैं. Now what we are doing is document.getElement by id again, which id we got the demo dot inner html, we wrote my first JavaScript, right? I can change it to write, let's say we are great students, right? When I just run it, यहाँ पे sentence change हो जाएगा. I hope this is clear to you guys. Let us close this one. Okay. Now there are JavaScript functions and events. Events तो हमने kind of देख ही लिया है, ठीक है? But we'll discuss this again. What is a function? Can anyone tell me? What is a function? I need the definition for a function. Yes, reusable block of code. So basically a line of code जिसको हम multiple times use कर सकते हैं, right? चलो ठीक है. I'll give you a minute. Okay, just go through these definitions once. Okay. Now let's see. A function can be called when an event occurs, right? जैसे हमने बटन पे क्लिक किया था, एक event occur हुआ था, and that time the function was called. Again, what was the function? We saw that the function is a block of JavaScript code. They can be executed when called. So basically, they can be executed again and again. This is for example, when we will be designing, let's say, a calculator. तो calculator के time पे हमें add function होगा, subtract function होगा. A lot of functions will be there, right? चलो, let's see. Okay. Let us see JavaScript in the head tag, right? So we are doing the JavaScript in the head tag. So हम यहाँ पे head tag में भी डाल सकते हैं, but the most जो है, I guess the standard that we are going to write the JavaScript inside the body tag, and we are going to write the link. The link tag is used for linking the CSS file that will be inside the head tag. Again, let's see what is happening here. So we have given JavaScript inside the head. ID का name है demo. A paragraph. So let me just reload this. So firstly a paragraph is written. बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो my function नाम का एक function execute होगा. Where is my function? You see
function dot my function document that get element by id and then हम यहाँ पे paragraph change का उसको like change कर दे रहे हैं, right, that paragraph too. So see, it is working like this. Now body तो हमने देख ही लिया है. External JavaScript, right? So हम externally भी सेम JavaScript को run कर सकते हैं, right? Let us close this one and let's go for other things. देखो अब बहुत सारी चीजें हैं that you can do. So you have used inner HTML, right, or inner text, right? You can use document.write, you can use alert, right? You can do console.log, right? You can use all these kinds of things, right? Now let me see an example, good example for you. Let's try this one. Okay. So in the inner text we have written hello world. यहाँ पे कोई भी button नहीं है execute करने के लिए. Hence the hello world is being visible in the p tag. Again same thing है. Let's see something else. Other things we can discuss. Okay, let us discuss this one. So it is showing me 11 because the window was reloaded, right? So alert tag क्या होता है? It gives you alert, right? एक तरह की functionality है. So you can use it for showing errors in your, in your website, या फिर maybe you have given a form और आपके यूजर ने सारी चीजें fill नहीं की है. So you will give him an alert that you should fill everything, right? So that is there. Now let's see what is there. In the script tag, we are writing windows.alert 5 plus 6. Let's change this to 5. And when I run this, it should be, it should show 10, right? Let's just run this. You see, we get an alert 10. I hope this is clear to everyone. Alerts, what are alerts? Close this. Let's see a few other things. Let's go for syntax. Okay. ठीक है. चलो. Now, अब आप values को define करोगे, right? आप initialize करोगे values को. You will be giving some values, right? जैसे for example के लिए, when you're using, let's say C++ or something, you are using, right, int to define an integer type. When you write a is equal to, let's say 10, right? ये चीज आप कर सकते हो. But you cannot do like int b is equals to, let's say 10. You cannot do this, right? ये गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि this 10 is different from this 10, upper 10, right? The second 10 is a string, right? ये एक string है kind of. ये it's a number. So integer takes a number, but what we are assigning in the second one is a string. So it will give an error, right? But what happens in JavaScript, आप यहाँ पे initialize नहीं करते हो कि what kind of variable you are defining. You're just saying you're going to define a variable. अब यहाँ पे दो तरह से हो रहा है, ठीक है? First we are using let. Let is used for giving fixed values, right? Fixed values क्या हो सकता है? What could be let used for? For example, your ID number, वो तो fixed है, that cannot change, right? Maybe your, आपके गाड़ी का vehicle का registration number, you cannot change that, ठीक है? Let's see your name, you cannot change. Let's say अगर name change नहीं होता है, so your name, but your age, वो तो हर साल change होगा, every year it will change. So you won't be defining your age inside the let. So where you will be defining your age inside? You will be defining your age. Sorry guys, I was confused a bit. Yeah, sorry. जो मैं बोल रहा था वो const है, not let. I was confused between var and let. Yeah. So where you will be defining your age in the variables, right? So हम पहले var use करते थे. Nowadays you will see not a lot of var are used. So firstly we were using var, right? So अभी मैं check करता हूँ. I don't think var is being used anymore. It has been obsolete, right? No, we are not using. We are using const and let. ठीक है?
Chalo, let us go here and let's see what is happening. So inside the script, we have defined let x is equal to 5. Const f name is that is your first name is equal to John. Document that get element by ID. So you're going here for the p tag demo dot inner HTML. F name. So what is f name? John plus is plus x. So John is 5 years old, right? So it will come it like this. So I can change the value here. I can go and write, let's say 25. And when I run this, John is 25 years old. I can change this to write Amit. Run this. It will be Amit is 25 years old. I hope this is clear. Let's see here. JavaScript keywords are case sensitive. Okay. So you will be using let, that is all will be in smalls. Okay. आप ये नहीं use कर सकते let. You cannot use this. It will give you an error, right? Chalo, let us move forward. Let's see what are statements. So statements are basically a line of code. आपने एक line of code को खत्म कर दिया. That is what you call a statement. ठीक है? They are the you will end it with a semicolon, right? So a JavaScript program is a list of instructions that should be executed. These programming instructions are called statements, right? Chalo, let us see anything else that is to be discussed here. Nothing much, I think so. Okay, so how do you give a comment, right? So use double forward slash. Okay. Just give me a moment, guys. Okay. Let's go for let. The let keyword was introduced in ECMAScript 6. That was in 2015, right? Variable with let have block scope, right? So block, what is a block scope? So अब अभी block of line of code लिखोगे, उसी block के अंदर you can use that variable. A block is defined with the curly braces. All right. Sure. I think this all should be clear. I guess पहले आपने किया हुआ है, so I won't be wasting so much time here. ठीक है, let and cons is okay. Let's go for operators. So operators are arithmetic operators, right? You use multiplication, right? You use assignment, comparison. Okay, so all these are there. Let's not waste our time here. Okay. Okay, I think this should be clear, right? The plus plus is used for increment and the minus minus is used for decrement. And also instead of writing A is equal to A plus B, right? You can write A plus equals to B. I hope this is clear. ये सब चीजें आपको clear है? How do you write all these things? Okay, thank you. Chalo. Let us go for comparison and conditionals. Okay, so an equal to is an assignment operator, but when you use double equal to, तो हम compare कर रहे होते हैं, ठीक है? And it will return us a boolean value, true or false, ठीक है? So when you're using double equal to, the description is like you're comparing it. Okay, x is equals to 5 or not, and it returns true or false. Triple equal to is used for equal values भी होंगे and equal type भी होगा, ठीक है? For example के लिए x double triple equals to 5 is true, but x triple equals to 5 is false, right? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा probably कि like 5 is equals to 5, but यहाँ पे it's also same like they are the integer values, but here the x is an integer value and this one is a string value, therefore it is coming as false. All right, this is for not equal to, and then you all can go through all these things, right? So I'll just give you a moment. आप इसको खोलो and go through these operator ones. Okay. Well, I go to the conditionals.
चलो, have you all done conditionals in C++, Java or something? और प्रोग्राम में आपने किया है? Okay, no worries. Just please confirm once, okay? क्योंकि मैं उस हिसाब से I will plan it, right? If you have not done it, if you are confused, I'll discuss in detail. Otherwise, हम short में इसको देख के आगे बढ़ेंगे. Please guys, take a minute and please confirm if you have used it, or we should waste our time on this. All right, everyone. चलो आपने किया हुआ अच्छी बात है. Then we'll just have a look through. If statement क्या है? When we compare something, right? If the condition is true, then execute a set of program, right? एक set of block of code. अगर नहीं है true, then execute second block of code, right? The switch statement. What is a switch statement? Basically, आप expression के हिसाब से you can choose, right? Let's say switch. I write a value. Let's say x is equal to 5. तो अगर x की वैल्यू 5 होती है, so let's say in this case y is equal to 5, right? तो ये वाला कोड रन करेगा, ठीक है, and then it will break. Otherwise, if you don't put the break statement, it will move to the next level. A default statement is used जब आपके कोई भी cases सही नहीं होते, right? Your expression does not lead to any of the case, ठीक है? A tertiary operator is basically a shorthand of your if-else operator, right? Everyone has done the if-else operator, right? If a condition is true, it will run this line of code, else it will run the different line of code. Sure. Let's go with loops. Okay. Okay. Yeah. ठीक है, यहाँ पे लूप, यहाँ पे जो कैसे डिफाइन हो रहा है, पहले हम फॉर लूप में इनिशियलाइज करते हैं, राइट? देन वी गिव अ कंडीशन एंड देन we give a increment or decrement or any kind of expression that changes the value. Okay, so what is happening in this case is let I is equal to 0, we are giving the index 0. Okay, I is less than car ka length I plus plus. Okay, now I is the your index ka value of this array. I hope array is clear to everyone. Everyone knows what is array. It's kind of a list of वेरिएबल्स. हम एक ही नाम से उसको हम लिख सकते हैं. जैसे कार्स का अगर मेरे को ग्रुप बनाना है, तो आई मेड इट. बस इसके आपके इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं. इंडेक्सेस स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, देन 1 2 3 4 5. तो बेसिकली फॉर लूप क्या कर रहा है ना, ये 0 से लेकर के कार के लेंथ तक जा रहा है. सो व्हाट इज द कार का लेंथ? सो कार का लेंथ इज 1 2 3 4 5 6. तो 6 का लेंथ है, सो इट विल गो टिल 5, राइट? टिल 5 इट विल गो. सो आई प्लस प्लस एवरी टाइम इट चेक्स द कंडीशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस कार्स एट आई. So cars at I, what will be there? The first value will be 0, so it will print BMW. अगली बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, so it will print the Volvo. ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा, राइट? चलो, the three expressions. The first one is initialization, usually the second one is the condition, and the third one is how every time you're going to change the value of. ठीक है, उसी तरह से और भी चीजें हैं. सो लेट अस नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर.
ओके, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू जॉन डो, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये सब चीजें हमने देखी भी हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से आप डबल कोटेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, टू डिफाइन अ स्ट्रिंग, बट लेट्स से यू वांट टू यूज डबल कोटेशन इनसाइड द स्ट्रिंग, तो आप वो नहीं कर सकते हो ना, देयर आर प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर एस्केप कैरेक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे if you would have defined it like this, it would have been treated as two different strings. यहाँ पे एक string यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, and second string is starting from here and it's ending here. And Vikings बेचारा बाहर फंस जा रहा है, right? It's staying outside. But you want, वहाँ पे आप क्या करोगे? Slash डालोगे after you know a character that you want to leave alone, right? So that is what we are doing here. Okay, just go through all these things, guys. Okay. Let's see what all things are there again. And some there are some bitwise operators, ठीक है, and or or not, ठीक है, ये bitwise operators होते हैं, like for example 1 is equal to 1. I hope आपको ये clear होगा, right? 1 or 0 is equal to 1, 0 or 0 is equal to 0. These things are clear to you all, guys, bitwise operators. I'll make a poll for this. Answer in the poll, okay? All right, I have asked a question in the chat. Please answer. All right, guys, let's move forward. We have already discussed JavaScript functions, but let's look at them. Just give me a moment, guys. I'm getting a call.
Hello guys. Sorry. Take functions. So we had scheme. Right. Let us move forward. ठीक है. आप अपने फंक्शंस में कुछ पैरामीटर्स भी डाल सकते हो, है ना? तो you can enter some values inside the functions as well. Functions से first से static नहीं होते कि आप यही वैल्यूज रिटर्न करेंगे और समथिंग, राइट? आप फंक्शंस में कुछ वैल्यूज डाल सकते हो एंड देन दे कैन चेंज, योर रिजल्ट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? In the script tag, you can see we have defined a function by the name multiply. We are going to enter some values a and b. It is expecting a value and it will return. So return keyword does what? It will return a value. So whenever you call a function, it should return something, right? So they will be returning a into b. अब a into b कहाँ से जा रहा है? You see, here you're invoking the function, right? So multiply 4 into 3. The 4 into 4 is equal to a. So b is equal to 3. It will multiply here and the return value will be stored in this result, right? So when we do this, the result will be shown here, right? So चलो इसको हम change करते हैं values को. Let us change this to 3 and we should expect a value of 9, right? See, it is working. So I hope all the function parameters work. चलो, all right. Okay, let's see, very small project. Fahrenheit to Celsius. यहाँ पे क्या हो रहा है? You are giving Fahrenheit value here. There is an expression कि Celsius calculate करने का क्या formula होता है. It is given here and will return the to Celsius. So to Celsius is the name of the function. यहाँ पे ये execute हो रहा, ये call हो रहा है यहाँ पे. It will execute here and the value will be stored in the value, right? चलो ठीक है. Now let us give a value. Let's say -40. And let us run this. You see, the value is -40. Because -40 का जो value होता है ये Fahrenheit and Celsius में same होता है. I hope this should be clear. Let us move forward. Okay. Array sets ये सब तो आपको clear होंगे ही. Now there are some regex, so regular expressions. ठीक है, this should be clear to you. A regular expression is a sequence of characters that form a search pattern. ठीक है, जैसे for example के लिए अगर आप क्या करना चाहते हो कि you have made a form, ठीक है, एंड उस फॉर्म में आप सिर्फ जीमेल का ईमेल एंटर करना चाहते हो, ठीक है. So you will make a pattern using your regex such that the value enter resembles let's say anything @gmail.com. ठीक है, या फिर यू वांट टू लेट्स से आप एक वैल्यू ऐसा लेना चाहते हो जो कि एक 10 डिजिट का फोन नंबर डिसाइड कर रहा है जो कि 9 से स्टार्ट होना चाहिए. सो यू कैन ऑल्सो मेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ऑलराइट. सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक आई प्रॉब्ली बी स्टॉपिंग हियर. ठीक है, मैं ज़्यादा अभी इसको जावास्क्रिप्ट को नहीं पढ़ाऊंगा. आई हैड मेड अ एग्जांपल ऐसे कैलकुलेटर का. So coded that. We'll see the code one by one. ठीक है, I'll share this code with you as well ताकि आप चेक कर सकते हो इसको. Let me run this one. Let's go live. I hope everyone has installed VS Code, right? सबके पास VS Code है? कोड मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत छोटा है. ठीक है, सिर्फ 2 लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे कोड्स हैं. ठीक है, सो आई विल जस्ट सेंड द कोड हियर. ठीक है,
and paste this inside a index.html file. Okay. Then there is a script. Okay. Paste this as well. ठीक है, चलो हम तब तक इसको देखते हैं. So see that this is how you can create an external JavaScript file, right? और एक आप ये एक index है .html. चलिए यहाँ पे अब बाकी तो पूरा का पूरा नॉर्मल बॉयलर टेम्पलेट कोड है. ठीक है, आप हेड में आपने लिखा है DOM मैनिपुलेशन डेमो टाइटल को. ठीक है, व्हेन आई कम टू द वेबसाइट आई कैन सी यहाँ पे टाइटल इज रिटन एज DOM मैनिपुलेशन डेमो. उसके बाद यू स्टार्ट अ बॉडी विद आईडी. इसको आपने टाइटल दिया हुआ है. लेट्स सी इसका यूज क्या आगे में. नाउ इट इज लाइक वेलकम स्टूडेंट्स. सो यू सी वेलकम स्टूडेंट्स इज देयर, राइट. Then there is a message. Click to the button to see DOM manipulation. ठीक है, हमने DOM manipulation को already देखा हुआ था, so we are going to see that even, right? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, on click we did the change page, and when you click on click me, ठीक है, जब आप पे क्लिक करोगे चेंज पेज नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. बट डू यू सी एनी फंक्शन हियर बाय द नेम चेंज पेज? नो, राइट, क्योंकि ये कहाँ पे स्टोर्ड है, इस फाइल के अंदर. यू सी inside the script.js we have given a function change page. What it is doing, it is कि ये DOM manipulation carry out कर रहा है and is giving telling us that get element by id title. टाइटल का जो इनर HTML है वो चेंज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट इज ऑसम से. ठीक है, पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, वेलकम स्टूडेंट्स, सॉरी, या इट विल बिकम जावास्क्रिप्ट इज ऑसम. टाइटल यहाँ पे चेंज होकर जावास्क्रिप्ट इज ऑसम आ जाएगा. सेकंड क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, जो टाइटल है उसका स्टाइल डॉट कलर शुड बी ब्लू. अगेन क्या हो जाएगा, ये जो है ये चेंज होकर के ब्लू कलर का आ जाएगा. And what is happening next in the message, right? The DOM has been modified successfully. Chalo, let us run this and see. You see, first line changed, JavaScript is awesome, its color turned in blue, and the next line, what it's showing me, the DOM has been modified successfully. Hope it is clear. Just run these programs on your end and tell me. I'm muting myself. ठीक है, आप 1 से 2 मिनट ले लो. Please confirm in the chat that you have ran the program, and then we'll start.
Yeah, hi Sumit. Can you please elaborate your question? What do you didn't understand the second one? Document dot get element by ID, title, style, color. आपको समझ में नहीं आया सुमित? Got a bit. कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. Let us go here. देखो क्या हो रहा है. पहली बात तो आप किस आईडी को कॉल कर रहे हो? टाइटल की आईडी को. ठीक है. हम यहाँ पे आते हैं. टाइटल आईडी कहाँ पे दिया गया है? H1 टैग को. जहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था? वेलकम स्टूडेंट्स लिखा हुआ था. बट आप यहाँ पे चेक करोगे, इन द वेरी फर्स्ट वन वी आर चेंजिंग इट टू जावास्क्रिप्ट इज ऑसम. ठीक है. अब जावास्क्रिप्ट इज ऑसम वो पहले ही चेंज हो चुका है. इन द सेकंड फेज व्हाट वी आर डूइंग, इस टाइटल को वी गिव अ स्टाइल. तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो ना. स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यू यूज द एट्रीब्यूट, यू यूज द वैल्यू कलर टू असाइन अ कलर, राइट. तो यहाँ पे आप उसको ब्लू दे रहे हो. इफ आई गिव इट रेड, इट विल चेंज टू रेड. ठीक है. So if I go on the website and I go here, तो पहले तो यहाँ पे वेलकम स्टूडेंट्स है. ठीक है. सो लेट मी गो हियर. देखो पहला बार क्या होगा, जब टाइटल को यहाँ पे ये रन करेगा, जावास्क्रिप्ट इज ऑसम हो जाएगा. जावास्क्रिप्ट इज ऑसम ये चेंज हो जाएगा. एंड देन इट विल चेंज इट टू रेड. सो इसका कलर जो होगा, फॉन्ट कलर होगा, वो रेड हो जाएगा. सो सी, आई होप दिस इज क्लियर. हम इसने इसका स्टाइल चेंज कर दिया. एंड स्टाइल के अंदर क्या चेंज किया हमने? कलर. आप इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो. ठीक है. यू कैन चेंज द हाइट एज वेल. ठीक है. आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वॉट एवर इज अलॉटेड बाय द स्टाइल. क्लियर सुमित? थैंक यू. ओके गाइस, सो टू थिंग्स. ठीक है. पहला कि मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर वाला जो कोड है वो भेजा हुआ है इन द व्हाट्सएप. प्लीज चेक इफ एवरीवन हैज रिसीव्ड दैट एंड कंफर्म मी इन द चैट. ठीक है. सो बेसिकली इन दिस वी आर यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस. ठीक है. हम HTML यूज कर रहे हैं एंड हम आपका जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं. फॉर नाउ आई विल जस्ट गिव अ क्विक गो थ्रू. आप एक बार रन करो और उसको खुद से एक बार समझने की कोशिश करो. ठीक है. आई वोंट डिग डीप इनटू दैट. अगर आपको नहीं समझ में आता है, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन आस्क दैट. ठीक है. योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकन बाय यशराज सर. ठीक है. आई थिंक आवर जर्नी वाज हियर. ठीक है. टिल ये 3 क्लासेस ही मुझे लेने थे. देन यशराज सर विल बी टेकिंग योर क्लासेस. ऑलराइट एवरीवन. एंड क्लासेस का टाइम प्रोबेबली चेंज होगा, आई गेस. इट विल बी 8:30. ठीक है. 8:30, सॉरी, आई राइट इट हियर. ठीक है. मैं ये मेंशन भी कर दूंगा वहाँ पे. ठीक है. सो इट विल बी फ्रॉम, सॉरी, 8:30 to 10 होगा. ठीक है. हम आधा घंटा प्रीवियस कर रहे हैं. I will go to the next code that I had prepared earlier. So ये कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर है. ठीक है. इसमें हम आपको मेनली, मेरे को दिखाना है आपको द स्टाइल डॉट सी एस एस दैट आई हैड प्रिपेयर्ड, राइट. सो द स्टाइल डॉट सी एस एस इज, यू सी हाउ द एक्सटर्नल सी एस एस वर्क्स. अब यहाँ पे यू सी देयर इज एस्ट्रिस्क. ठीक है. एस्ट्रिस्क है, देन बॉडी है, देन दिस इज अ हैशटैग दैट इज यूज्ड, राइट. अभी हैशटैग आपने कहाँ पे देखा होगा? ठीक है. यू सी यहाँ पे आपने सॉरी, अच्छा यहाँ पे दिस इज नॉट मेंशन, राइट. सॉरी, नो वरीज. तो आपने यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू करके आता है ना. आई गॉट कंफ्यूज. चलो. सो इन दिस केस यू सी हैशटैग इज बीइंग यूज्ड एंड देन देयर इज डॉट यूज्ड. ठीक है. तो ये सब चीजें हम देखते हैं. फर्स्टली यहाँ पे जैसे जो भी यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है विद स्टार्टिंग विद अ डॉट, अ फुल स्टॉप, इट्स अ क्लास. ठीक है. सो कैलकुलेटर कंटेनर नाम का एक क्लास है. यू सी यहाँ पे आ भी रहा है, एलिमेंट क्लास इज इक्वल टू कैलकुलेटर कंटेनर. ठीक है. उसी तरह से this calculator, if I hover here, see this is an ID. You see ID है. So whatever starts with a hash is an ID. Whatever starts with a dot is a class. I hope this is clear. Overall functionality same होती है. ठीक है. उनकी there are only slight differences. Everyone.
क्लास एंड आईडी को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं? ओके, नाउ जब मैं एस्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे वेबसाइट में ये चीज को अप्लाई करेगा। सो पूरे के पूरे वेबसाइट का ये मार्जिन 0 रखेगा, पैडिंग 0 रखेगा, ठीक है, बॉक्स साइजिंग ये करेगा, तो हर एक जगह ये अप्लाई हो रहा होगा आपका, ठीक है। बॉडी क्या है कि पूरे के पूरे बॉडी में ये अप्लाई हो रहा होगा। सो यू आर गिविंग अ डिस्प्ले फ्लेक्स हियर, ठीक है, यहाँ पे आप डाल रहे हो, ये पोजीशन बताता है आपका कि यू नो हाउ यू आर गोइंग टू मेकिंग इट अ फ्लेक्सिबल स्क्रीन, राइट। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हो, यानी कि एवरी कंटेंट विल बी इन द सेंटर नाउ, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, सो द अलाइनमेंट ऑफ द बॉक्सेस विल बी इन द सेंटर, ठीक है। उसी तरह से मिनिमम हाइट विल बी 100 VH, सो 100 VH इज बेसिकली योर होल स्क्रीन का हाइट इज 100 VH, ठीक है। तो मिनिमम हाइट विल बी 100 VH। अब इस 100 VH में से इट विल जस्टिफाई दी ईयर फ्लेक्स हियर, राइट। इस तरह से बैकग्राउंड हमने दिया हुआ है, हमने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है। व्हाट इज अ लीनियर ग्रेडियंट? इट स्टार्ट्स विद वन कलर एंड्स विद अनदर कलर, ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद दिस कलर, वी एंडेड विद दिस कलर। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं पहले इसको आपको रन करता हूँ, ठीक है, कोड दिस, लेट मी रन दिस, ओके। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट दिख रहा होगा। सो इट स्टार्टेड विद दिस कलर एंड इट एंडेड विद दिस कलर, ठीक है। Let me close this one. All right. चलो मैं div tag के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। Div tag is used to divide your container into different structures. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने वेबसाइट को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक div बना लिया। ये div क्या करेगा, मेरे पूरे के पूरे वेबसाइट को कवर करेगा। Then probably I wanted to define a div जो मैंने यहाँ पे ऊपर में डिफाइन किया, ठीक है। इस div को मैंने क्या कहा कि इट विल बी पोजिशन एट टॉप, ठीक है। इसके जो मार्जिन होंगे, ठीक है, लेट्स से आई विल गिव इट समथिंग 4 px 10 px ऐसे करके आई गिव इट, ठीक है। इट विल बी एब्सोल्यूट। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मीन कि ये फिक्स पोजीशन में होगा ऑन द टॉप, ठीक है। इट विल बी ऑन एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है, फिक्स पोजीशन में होगा, राइट। उसी तरीके से फिर मैंने क्या किया कि लेट्स से वेबसाइट में मुझे एड्स दिखाने थे, राइट। सो आई मेड दिस साइट का बार एज फिक्स फॉर एड्स। व्हाट विल बी विजिबल हियर, एड्स ऑन माय वेबसाइट, ताकि मैं एड से कमा सकूं। तो फिर से मैंने क्या किया, इसको भी इसका साइड मैंने कर दिया, जो अलाइनमेंट है साइड कर दिया, लेफ्ट कर दिया। सो लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया इसको मैंने, इसको भी मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है, ताकि ये भी फिक्स रहे मेरे साइड में। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया जहाँ पे हम और बहुत सारे सब मेन्यूज डालेंगे, लेट्स से, ठीक है। Expand this. Let's say sub menu will be here. Then I defined an area here जो कि मेरा मेन वेबसाइट का कंटेंट डिस्प्ले करेगा। सो मेन कंटेंट, ठीक है, इट विल बी स्क्रोलेबल, ठीक है। दीज टू एरियाज विल बी स्क्रोलेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये दोनों के दोनों एरियाज जो होंगे ये स्क्रोलेबल होंगे, सो दैट वी कैन स्क्रोल इट डाउन। बट ये एब्सोल्यूट होंगे, ये स्क्रोल नहीं हो सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, यू विल बी डूइंग इट विद अ div tag. I hope this is clear to everyone. You will be doing with the help of a div tag, right? Clear, Sumit? All right. चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे पहले हमने क्लास दे दिया, यहाँ पे क्लास का क्या है, यहाँ पे कैलकुलेटर कंटेनर। लेट अस कम टू दी CSS। कहाँ पे कैलकुलेटर कंटेनर, यू सी पैडिंग 20 px। तो हमने क्या किया कि उस कंटेनर को पैडिंग दे दी 20 px की, राइट। लेट अस गो हियर, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, उसी तरह से हमने बहुत सारे इनपुट बनाए जहाँ पे ये मेरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने आईडी दी डिस्प्ले करके, व्हेन आई गिव द आईडी डिस्प्ले टू इट, यू कैन सी इन द डिस्प्ले, लेट अस गो हियर, इट्स विड्थ विल बी 100%, हाइट विल बी 60 px। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं हाइट को अभी 80 px कर देता हूँ, एंड यू विल सी कि ये जो मेरा कैलकुलेटर है इसका ये बढ़ गया है हाइट,
ठीक है, its height has increased. I think it is not आपको पहले ध्यान में नहीं होगा. So if I let's do it 40 px, how can I save it? You see ये छोटा हो गया. Alright, चलो. उसी तरह से बटन के बहुत सारे ग्रिड्स हैं. ठीक है, सो अगेन देयर इज अ होवर फंक्शन. होवर फंक्शन से क्या हो रहा है, इट विल स्केल. दैट मींस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो हाउ इट विल बी देयर, सो लेट्स सी. जब देखो ये इट इज गेटिंग बिग राइट व्हेन आई एम होवरिंग ओवर इट. होवरिंग मतलब क्या होता है कि यू टेकिंग योर माउस ओवर इट, यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन इट येट. ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर लेकर के गया. ठीक है, किसी भी बटन के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ ना, यू सी साइज इंक्रीजेस बाय अ बिट. सो वही यहाँ पे हो रहा है. Where it is, see, so on button when we hover, transform, basically scale the size to 1.05. So if it is not visible to you, let me just keep it 1.5. Let me save here, let me go here so that you can see. अभी देखो, अभी आपको विजिबल होगा, है ना. ओवर पेज का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है. लेट मी कीप इट 0.5. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपके लगे हुए हैं. अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे index.html पे, अगेन यू कैन सी क्लास को आप क्लास लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे. सिमिलरली आईडीज विल बी डिफाइंड एज आईडी एंड देन इज इक्वल टू द आईडीज नेम, राइट. चलो, अगेन यू सी स्क्रिप्ट को मैं कैसे कॉल करता हूँ. स्क्रिप्ट इज इक्वल टू src. आई राइट द सोर्स ऑफ द स्क्रिप्ट एंड script.js. क्यों मैंने सिर्फ script.js लिखा, क्योंकि विदिन इनसाइड दिस फोल्डर कोई और पाथ नहीं फॉलो कर रही है. अदरवाइज यू विल राइट द पाथ हियर. सिमिलरली यू कैन सी मैंने CSS को यहाँ पे लिंक से यूज किया है. लिंक से मैंने इसको, लिंक टैग से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है. ठीक है, सो आई गिव द स्टाइल शीट. इट्स अ स्टाइल शीट एंड इट इज style.css, राइट एवरीवन. तो जैसे script.js में देखो मल्टीपल फंक्शंस हैं. ठीक है, यू फंक्शन कैलकुलेट, राइट. यहाँ पे आप ऑपरेटर आप पहले से नल डिसाइड कर रहे हो. फिर आपका एक ऑपरेटर यहाँ पे आएगा. अगर ऑपरेटर प्लस है देन ऑपरेशन ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो एवरीथिंग इज डिफाइंड हियर. सो आई हैव ऑलरेडी सेंड द कोड ओवर टू द व्हाट्सएप ग्रुप. एक बार आप प्लीज गो थ्रू करो, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस. ठीक है, एंड रन एंड सी वेदर दिस वर्क्स आउट फॉर यू. ठीक है, नहीं समझ में आता है, keep your doubts collected. Next class में we'll be discussing that. All right, Sumit, Amit, everyone, please confirm once. All right. ठीक है, I'll stop class today here itself. So आज का half an hour जो है ना next class में cover होगा. So next class will be on your I guess Thursday, right? Yeah. So Thursday को 8:30 to 10:30 the class will be there for 2 hours. All right. ठीक है. Anyone, please, if you have any doubts, please let me know. ठीक है, I am stopping the recording for now.